This is Suman uh, coming live somewhere from IIT Kanpur. Right. I welcome you to this session of physics. Ask me anything by Prutter AI. This is session number 4 that I'm taking. Right. इसमें हम क्या करते हैं आप लोग Prutter AI जो हमारा वेबसाइट है जहाँ whatever you questions that you arise there, I'm just answering those. Right. तो I have chosen जितने भी सवाल आए थे उनमें से I have specified I have chosen some questions. Then we're gonna discuss all those questions in this session. Okay. Starting, this is me, Suman Das. I'm BT Mechanical Engineering from IIT Kanpur, currently in fourth year. Okay. Also, let's just start. So the first thing that we have is Kirchhoff's law. So basically, Kirchhoff's law, आपका 12th में आता है 12th physics में, right? It's just basically the whole. So what is Kirchhoff's law? Just Kirchhoff's law, right? So basically देखो ऐसा होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में this Kirchhoff it has two laws, right? It has two laws. The first one is called KCL. The second one is called KVL. KCL is Kirchhoff's uh, current law. And KVL Kirchhoff's voltage law. Right. So just discuss one by one. First is KCL. What is KCL? KCL ये बोलते हैं कि the total current. Suppose मान लो कि वो junction है, ठीक है? Suppose you are having a junction like this, CU junction. Suppose this is I1, this is I2, this is I3, right? तो Kirchhoff's currently ये बोलता है कि I1 plus I2 plus I3 it has to be equal to 0. ठीक है? और अदर क्या क्या हम क्या बोल सकते हैं अगर हम डायरेक्शन को भी अकाउंट में ले तो कैन से सिग्मा ऑफ I in it must be equal to sigma of I out. मतलब एक पर्टिकुलर जंक्शन में जितना भी करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाना चाहिए. Whatever the current comes into one junction, it has to be go out with the same amount. सिंपल सी बात है, लॉजिक है, ठीक है? जैसे यहाँ पे बड़ी बात नहीं है इधर कि आप लोग समझ में नहीं है, बहुत इजी है. यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात है. इफ हैविंग हमारा तो स्क्वायर हेडिंग हैविंग ए चौक, यहाँ पे दो यू हैव 2 एम्पियर हियर, तो 3 एम्पियर यहाँ से चला गया, राइट? तो डेफिनेटली यहाँ से कितना आएगा, 1 एम्पियर आना चाहिए ना. ये अगर 2 एम्पियर ऐसे जा रहा है, 1 एम्पियर ऐसे जा रहा है, राइट? और तभी ना ऐसे देना बोले ना 3 एम्पियर ऐसे बाहर जाएगा. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से 3 एम्पियर को बाहर जाने के लिए 2 एम्पियर अगर एक तरफ से आ रहे हैं तो वो एक 1 एम्पियर को अदर तरफ से आना ही पड़ेगा. गेटिंग दिस वन? दिस इज सिंपली योर किर्चॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, ये बहुत इजी है. मतलब इससे क्या करते हैं ना, हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर. ओके, तो इससे क्या होता है, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर. ठीक है, इसे हम बहुत सारे डेरिवेशन से निकालते हैं, जस्ट डिराइव ऑल द फॉर्मूलास. ठीक है, तो इसका मेन क्या है, सिग्मा ऑफ आई इन इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई आउट. ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है. लेट्स जस्ट गो फॉर किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. केवीएल जिसे शॉर्टली हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. ये बहुत सिंपल है. क्या बोलता है ये कि सपोज मान लो इन ए लूप, सपोज देयर इज रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4. तो आपने मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया है, सपोज ये स्टार्टेड फ्रॉम हियर, दिस पॉइंट इज ए. तो अगर आप एक टोटल राउंड मारो, इफ यू जस्ट कंप्लीट वन राउंड, the net change in potential will be equal to 0. Simplest what, मतलब मान लो यहाँ पे V है, दिस इज वी बी है, दिस इज वी सी है, दिस इज वी डी है. तो हम क्या करें पता है, यहाँ से ई वी है, राइट? Suppose the current I is moving on, right? And the resistance is R1, this is R2, this is R3, and this is R4.
then according to KVL, what is this? Now VA यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। VA माइनस आई इंटू आर वन इक्वल टू क्या है, VBA, ठीक है। और क्या, VB माइनस आई इंटू आर टू, VB माइनस आई इंटू आर टू इक्वल टू व्हाट, करंट फ्लोइंग डिस्टेंस इक्वल टू VC। नाउ व्हाट, VC माइनस आई इंटू आर थ्री इक्वल्स टू VD here, ठीक है। एंड VD माइनस आई इंटू आर फोर इक्वल टू VA, ठीक है ना। तो व्हाट, so all this points you can write it in one word, that is equal to what, वो क्या है आपका, VA minus the VD, let's just put it VD right over here. ओके, आई होप कि तुमने वो देखा होगा। VD माइनस आई इंटू आर फोर इक्वल टू VA, ठीक है। VD क्या था आपका, VD था आपका VC माइनस आई इंटू आर थ्री माइनस आई इंटू आर फोर इक्वल टू VA। VC क्या था आपका, VB माइनस आई इंटू आर टू माइनस आई इंटू आर थ्री माइनस आई इंटू आर फोर इक्वल टू VA। अगेन व्हाट, VB क्या था आपका, VA माइनस आई इंटू आर वन माइनस आई इंटू आर टू माइनस आई आर थ्री माइनस आई आर फोर इक्वल टू V, okay। VB कैंसिल आउट हो गया, दिस इंप्लाइज व्हाट, आई कॉमन ले ली, राइट। दिस इज यू नो आर टू प्लस आर फोर इक्वल टू, so simply what you can say, now delta sigma V equal to 0, ठीक है। सिग्मा V इक्वल टू व्हाट, 0, दस। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन सर्किट इज 0। सपोज यू आर हैविंग अ सर्किट लाइक दिस, राइट। एक, बट एक क्लोज लूप में आपका डेल्टा V कितना हो जाएगा, 0। सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ये डेल्टा V शुड बी इक्वल टू 0, सीधा यू कैन से डेरिवेशन, ठीक है। ऑल सेट। So these are the two basic and fundamental laws of current and electricity. This is called Kirchhoff voltage law and Kirchhoff, uh, you know, current, KCL, KVL, ठीक है। This is good for angular momentum. Angular momentum ये आपका आता है मेनली 11 इंसियट 11 फिजिक्स में आता है। इससे आपकी रूबरू, जब आप मोमेंटम पढ़ लेते हो, जब आप सेंटर ऑफ मास पे आते हो, तभी आपका इसके साथ रूबरू होता है, राइट। और इससे इससे और बढ़िया तरीके से आपका रूबरू रोटेशनल बॉडीज में होते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्मेडी, राइट। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जस्ट हियर, एंगुलर मोमेंटम, राइट। this is this is just an analogous of momentum in linear, right। this is the analogous of linear momentum पर रोटेशन आ जाता है, जब this is uh, you can see like देखो हिंदू समाज में कितने, हिंदू माइथोलॉजी में कितने युग होते हैं, चार युग, राइट। देयर आर फोर युग्स, कलयुग, सात। ठीक उसी तरह जिसमें क्या होता है, हर एक युग में भगवान का बहुत सारे अवतार है, राइट। कृष्णा इज देयर, रामा इज देयर, राइट। उसी तरह जब हम नॉर्मल बोलते, जब हम ट्रांसलेशनल की बात करते, तो वो जो मोमेंटम रहता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल मोमेंटम। जैसे हम रोटेशनल में चले जाते हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स में चले जाते हैं, देन हमारा जो मोमेंटम होता है वो हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में जिसे हम मास बोलते हैं, उसी को हम रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, इनर्शिया। गेटिंग दिस वन, एग्जैक्टली उसी की तरह ही है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो दिस इज डिनोटेड बाय वेक्टर L वेक्टर, यू कैन सी, एंड दिस इज, इसका बहुत
सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दिस इज कॉल्ड आर क्रॉस पी, पी इज अ लिनियर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड आर क्रॉस एम वेक्टर. So mr cross p, I when I used to, in your as I used to remember like this, angular momentum equal to mr plus p. So I also want you guys to remember like this simply, L equal to what, mr plus p. ठीक है, और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखो एंगुलर मोमेंटम इस L को आप ऐसे भी लिखते तो I into omega. What is I? I is your inertia. Omega क्या है आपका angular speed. ठीक है, डेरिवेशन, इसको डेरिवेशन क्या, डेरिवेशन तो बहुत सिंपल सी बात है. यहाँ पर L आपका क्या आ गया, m into r cross v. ठीक है, m is there. अब मतलब अगर r को लिखूं मैं, not just take it mode, right? Just let's just talk about only the magnitude. So what will happen then? M is there, R is there, but क्या होगा इसका जो आपको V है, V क्या मिलता है R into ओमेगा, हाँ कि ना, this will be equal to M mod R square into ओमेगा. M R square क्या है I, so mod equal to I into ओमेगा. ठीक है, बहुत सिंपल है. इसका ध्यान, फिजिक्स में हमेशा एक चीज क्या याद रखना बेटा, यूनिट की. बिना यूनिट की फिजिक्स लिखना मतलब आप बड़ी गन से आपका मार्क्सिंग पूरा खत्म हो रहा है, राइट. तो इसका यूनिट है आपका केजी पर केजी मीटर स्क्वायर पर. ठीक है, ऑल्सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम. इसकी नो इन न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, द चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ फोर्स. उसी का एनालॉगस रोटेशनल मैकेनिक्स में आ गया, क्या आ गया, द चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क. ठीक है, so these are very similar, you can say. Translational mechanics एक चीज है, this and there is this rotational mechanics, right? The अगर आप देखोगे सही से then you can relate कि हाँ ये these look similar, but actually they are not. ठीक है, and if you talk about conservation of angular momentum, जैसे कि हमारा ट्रांसलेशन में रहता है the conservation of momentum, हाँ कि ना, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन 9 क्लास में पढ़ा होगा, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, क्या हो conservation momentum क्या था, एक दो bodies है, then they just collide each other, then two bodies are like this, which two bodies like this, right? V m1 v1 m2 v2, after collision the momentum हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, then you know then we finally say what, L initial equal to L final. ठीक है, जैसे जैसे कि नॉर्मल में होता है कि कंजर्वेशन मोमेंटम इज आल्सो हैव व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, बस क्या ध्यान के रखना कि there must not be any, there must not be any external torque. ठीक है, ऑल सेट, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटरेस्टिंग क्या है, देखो, somebody just asked me कि so there is this fan, right? ये हमारा हमारा फैन है, and I have this switch board over here. ठीक है, this is on, this is off. तो somebody just asked me कि sir जब हम स्विच ऑन करते हैं फैन का या ट्यूबलाइट का, तो क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो कि यहाँ के पास में बैठा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्या वो ऐसे ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाते हैं क्या, गेटिंग दिस. somebody just asked me इस सर हमें तो ये पढ़ाया गया है कि the speed of electricity is equal somehow similar to speed of light and that is equal to 3 lakh kilometer per second. तो this can be possible, no, कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, हम जैसे स्विच ऑन करते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ कहाँ आ जाए, फैन के पास आ जाए, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है. ठीक है, एग्जैक्टली इन प्रैक्टिकलिटी होता है क्या है कि सपोज मान लो देर, देखो तुम्हारा वायर है, तो वायर में क्या रहता है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे रहते हैं.
So what happened? No, कि जैसे whenever there is a potential difference, so बोलते हैं potential difference. Whenever there is a difference in potential, at that time एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे धक्का देते हैं, इसको इसने धक्का दिया ऐसे, इसको इसने धक्का दिया ऐसे, तो फाइनली मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर किया तो क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट ना। तो जैसे हम सुई करते हैं, हम ये नहीं करते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाए, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देते हैं, एंड दिस गोइंग ऑन, राइट। डोमिनेंस इफेक्ट, नॉट डोमिनेंस, छोड़ो। सॉरी। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ से लेके तो वो पहले कहाँ पर, यहाँ पर था, अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, हाँ, ये बहुत कम। ये डिस्टेंस ट्रेवल, दिस डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, से बोलते वीडी। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत सिंपल है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग खराबी की जरूरत नहीं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, वीडी इक्वल टू व्हाट, डी बाई टाइम टेकन। अगर आप यू नो अगर आप जेई मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो देन देयर इज नो नीड ऑफ द डेरिवेशन, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस देन यू आर सपोज्ड टू नो द डेरिवेशन ऑफ दिस, right? The drift velocity. I can write you the formula. So the formula goes like this. The formula is Vd equals to I upon Na. What is A? A is the cross-sectional area. Right? This is scissor A. Right? I is the current flowing, and N is the number of charge carriers per unit volume. N is what? Number of charge carriers per unit volume. ठीक है, ये तो बताइए आपको कितना है, 1.6 माइनस कितना, 18 17, बताओ 19 होता है, क्या करें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, तो बहुत अच्छा डेरिवेशन है, लाइक you just take a cross sectional area, then after time dt you will be moving by distance dx, then you're supposed to find the value of dx and you know the dt, so dx by dt will give you the vd. I'm not going to derive that from the simulator, it will take a very long time. Okay, so moving next one. So the next topic that we have is work energy theorem. So classical mechanics में this work energy theorem is बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इसी से बहुत सारे फॉर्मूलेस आपको डिराइव कर, बहुत सारे फॉर्मूलेस डिराइव हो गए आपके, ठीक है। दिस दिस सिंपली क्या करता है ना, वर्क को रिलेट करता है एनर्जी के साथ, ठीक है, बोलता है, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू। The simply says the delta K, the change in kinetic energy is equal to W net. Suppose you are having a body like this, right? And you have potential W external. So the whatever work that has been done by this external force on this particular body, on the particular system, could change its could change this kinetic energy from Ke1 to Ke2. ठीक है, तो whatever the external energy, जितने भी external force ने काम किया है इस सिस्टम पर, that would simply increase its kinetic energy. This is your work and energy theorem, right? ठीक है, इसका derivations I can say बहुत easy, if you can see, then I can write it in a very simple way. तो F आपका क्या होता है, mass into acceleration, ठीक है, mass into acceleration। अब वर्क कितना होता है, F into D, F dot D, F is M into A। तो D के लिए क्या करेंगे अपन, D into T। अच्छा, what do you know, the velocity of final square equal to velocity of initial square plus 2a d। अरे वो मोशन का थर्ड इक्वेशन, राइट, तीन इक्वेशन थे ना,
v equal to u plus at, s equal to ut plus r by t square, and v square equal to u square plus 2s. So v is the final velocity. That only v final the square equal to v initial square plus 2ad. Getting this one? From here, find the value of d. What will happen here? The v final square minus v initial square upon 2 into a. Okay. So this will be equal to m into a into d की क्या लिखेंगे अपन v final square minus v initial square upon 2 into a. So a ने a को कर दिया. This will be equal to half m into v final square minus v initial square. अगर ऐसे if you just open it up, you can find out कि half m into v final square minus half m to v initial square is equal to ke final minus ke initial. ठीक है, समझ में आ गया पूरा इसको. This is the main statement. So the no, and you are supposed to know this. Whatever the work done by the external force on a particular system, the it will change its kinetic energy from initial to final. ठीक है, understood? चलो, moving next now. So what do you have? Yeah, inertia. Let's just discuss what is this inertia term. देखो, बहुत सिंपल है. You know, अच्छा, what is mass actually? Physics में mass करता है क्या? बताओ. As if you know, inertia कोई formula नहीं. Just need to follow. Should be read, I guess. Let's make it. Inertia is equal to mass. इतना तो पता ही होगा. तो जिसका जितना बहुत ज्यादा इनर्ट मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया है क्या. So what is inertia? Inertia basically it resists change in its state. देखो, अगर कोई body, suppose you are having a system like this, right, and you are applying some force external, applying some external force. So this external force क्या करेगा ना, इसका जो state है, what whichever it is, it may be in rest, it may be in motion. क्या करेगा, उसको state को change करने की कोशिश करेगा. कौन करेगा? This f external. But this mass, हमारे पास इसका जो mass है, this will what? This will resist. ये resist करेगा this change. So mass will simply is a hindrance. You can say mass is a hindrance of changing of state by the external force. ठीक है, मास क्या है आपका? सिंपली ये रेजिस्ट करता है. तो मैं इतना सब मास के बारे में क्यों बता रहा हूँ जब टॉपिक हमारा इनर्शिया है. तो ऑल आई एम सेइंग बेटा, लिसन, when you have this, when you have a translational, just write it there. So when you have your translational mechanics, you have what? Your mass. So when you go to this rotational mechanics, you are having, ठीक है, जब हमला क्या होता है, m into r square, mr square. ठीक है, जैसे कि देखो, let me just write it for you. Translational and here you have rotation. यहाँ पे आपका मास होता है, यहाँ पे आपका inertia होता है. Here we have velocity, and here we have what? Angular speed, omega. Here we have acceleration. Here we have what? Angular acceleration, not alpha. यहाँ पे आपके पास force होता है, and you have torque. ठीक है, here you have momentum, this is p. Here you have angular momentum, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले सेशन में किया है. ठीक है, तो these all are interlinked, not interlinked, like you can say कि अगर आप ठीक से देखोगे ना, आपको लगेगा कि अरे ये तो दोनों सेम ही है, right? But only this is exactly as my teacher used to explain like this. You know, there are 4 yogas in Hindu mythology, right? So जैसे कि पहले अवतार in one of the yoga, Bhagavan was in the form of Vishnu, then Ram in the next yoga, then Krishna, right? Just like exactly only
mass in translational you that is equal to inertia and rotational degree. This is no fun, nothing else. Okay, so moving next, resonance. This is a very interesting topic. Resonance. What is resonance? देखो रेजोनेंस ये बेसिकली आपका आता है 11th की फिजिक्स में जब आपकी मुलाकात होती है एसएसएम से। व्हाट इज एसएसएम? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएसएम नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ लोगे एक बड़ी बात। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, याद है ना? हम लोग ऑसिलेट करते रहते हैं फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। बोलिए क्या? तो बेसिकली रेजोनेंस ये होता है, सपोज मान लो यार हैविंग ए सिस्टम। देखो सिस्टम का ना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। सो सिस्टम एज इन सिस्टम का अपना क्या होता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। सपोज वी आर हैविंग ए सिस्टम, मान लो ये आपका ये हैविंग यू नो सिस्टम मास m and it just this is spring right up. Okay, it has a natural frequency. This omega naught can be found as under root of kappa by m. Okay, for mass spring system, this is your resonance frequency, this is your natural frequency. अब क्या होता है जब external frequency, if the external frequency, like if external frequency equals to natural frequency, then हम क्या बोलेंगे? The system is in resonance with the surrounding. ठीक है? Getting this one or not? I hope you understand. ठीक है? तो मतलब आप लोग देखा होगा, राइट? यू हैव सीन दिस वन, डैम्पिंग होता है। यू आर हैविंग योर डैम्पिंग, डैम्पर इज द नो। देखो हाँ, अगर हम इसको रियल रियलिटी से रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करें तो यू कैन फाइंड इट आउट कि आप झूला झूलते हो, राइट? झूला झूलते हैं स्विंगिंग। सपोज वन मैन इज देयर एंड ही जस्ट पुशिंग यू राइट लाइक दिस। तो आप लोग यहाँ पे आए पहले, सेकेंड टाइम वो आपको कुछ फोर्स देगा तभी आप यहाँ हो, राइट? अदरवाइज यू कैन डिसिपेट सम एनर्जी, राइट? This you can say this man is applying the force so that the man on the Zula can be in resonance. ये ताकि वो जो टॉप पॉइंट है इसी को बार बार टच करके आ सके, राइट? दिस इज ए क्लासिकल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। Let's move to this and having this topic electric charge. What is electric charge? Let's just explain it out. But yeah, electric potential. देखो देखो मैंने स्ट्रक्चर आउट पर 12th की फिजिक्स ना आपको चार्ज ही तो है पूरा। पूरे 12th में चार्ज के बारे में पढ़ते हो। फर्स्ट क्या आता है? चार्ज और प्रेशर। फिर क्या आता है आपका? चार्ज और मोशन। इसमें दो कंडीशन आ जाएंगे, v इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी क्या है? चार्ज एट चार्ज इन मोशन। यहाँ पे कंडीशन क्या है? v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। v आपका कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आपका v कांस्टेंट नहीं है then what will happen? We'll have some acceleration. Acceleration will be there. Your acceleration will be equal to 0. तो आपका चार्ज रेस्ट में रहता है, you are having what? Electrostatics. यहाँ पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है एंड कैपेसिटर, right? Then you have electricity आ जाता है, then you have your
यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, EMW एंड योर AC, यहाँ पे EMI आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMF आ जाता है। ठीक है, तो पूरे 12th के फिजिक्स में आप बस चार्ज के बारे में ही पढ़ते हो रहे। And if you are having what is electric charge, if you are asking what is electric charge, then I would say कि electric charge, uh, electric charge is nothing but whenever there is a movement of charge, whenever the charge moves with a constant velocity, it's gonna produce some electric energy. It's gonna produce some electric. Basically, it's gonna produce an electric field, and in the electric field, you're gonna find the electric energy, right? देखो बेटा ऐसा रहता है, एनर्जी स्टोर करने का ना आज के टाइम पर हमारे पास दो ही तरीके। ठीक है, आज के टाइम में हमारे पास दो ही तरीके। द फर्स्ट थिंग टू स्टोर द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड थिंग टू स्टोर द एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? सो इफ यू स्टोर द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए हमें क्या चाहिए बताओ? आप पढ़े हो उसके बारे में? जल्दी बताओ, कमेंट करना। ठीक है, सो फॉर दैट वी नीड कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, आपको जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में छिपाया जाता है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर किया जाता है। बट इनके सब, अच्छा चलो अभी बताओ कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आंसर बताओ। दैट इज कॉल्ड इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर बारे में हाउ मेनी ऑफ यू आर हियरिंग दिस टर्म इंडक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आपको है देन यू शुड यू नो रीड। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज, आई होप आई एक्सप्लेन इट। और अनलाइज लेस मूव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट जस्ट वर्क इट आउट। देखो force can suppose there are two charges, right? They are having a q1 charge here and they are having a q2 charge, q2 charge over here. There is the force will be equal, force universal will be equal to k q1 q2 by r square. I'm just writing the magnitude only. Okay, I'm not concerning about this, guys. So force is equal to k q1 q2 by r square. Now it comes to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या बोलते हो? सपोज इज Q2 इक्वल टू 1, अगर Q2 आपका 1 हो जाए, देन व्हाट इज द फोर्स एट हियर? व्हाट इज द फोर्स एट हियर? दैट इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस सिंपल व्हाट KQ into 1 into by r square is equal to KQ by r square। ठीक है, ready this one? Now इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर यू नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली बट is equal to k q by r square into r is equal to into dr is equal to k q by r, right? हालांकि मैं इसमें पॉइंट पार्टिकल ही I'm only talking about for a point particle, so for a point charge this is equal to k q by r। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सपोज मान लो ओके, दिस implies what कि सपोज v dot dr, okay, so v equal to what, e dot dr, dv equal to r। Suppose आपके पास एक particular having a three-dimensional space over here, right? And you suppose at this particular point, you know the potential. Then what you can do, if you just divide the potential by dr, dv by dr, then you can get the electric field. ठीक है, I hope you understand this one. This is electric potential. मतलब ऐसा रहता है कि suppose there is this charge, right? We're having a charge like this, तो इसका ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे क्रिएट होते हैं, बस ये पूरे मतलब बेसिकली ऐसे बोला जाता है पोटेंशियल, these are called equipotential surfaces, they are called what, equipotential surfaces, so you are having a constant potential। ठीक है, so ये पूरे रीजन में आपका क्या होगा ना, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, ओके, so next parallelogram law, this is very simple, I'm going to explain this one, but very
There are two laws. First one is triangle law. So whenever this A vector over here, this is your B vector, this will be your C vector, and this C vector will be equal to A vector plus B vector. This is called resultant vector. Resultant vector. Okay. It's called resultant vector. So this is the first thing. The second thing that we have is parallelogram law. So what it's saying? Suppose you are having a vector like this, and we are having a free vector. You are having a B vector like this. Then you can do this. You can just shift this B vector to this one. आप क्या करते हैं ना, B वेक्टर को यहाँ पे से शिफ्ट कर सकते हो. अब कहाँ ले सकते हो? यहाँ पर ऐसा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ए का टेल भी यहाँ पर है और बी का टेल भी यहाँ पर है. पहले क्या होता था, ए का जो हेड रहता है वहां पर आपको बी का टेल लिखना होता है. देन ओनली यू कैन गेट द ट्रायंगल लॉ. बट इन पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ए एंड बी का टेल जो है वो सेम ही रहता है. एंड व्हाट यू से, हम ऐसे करते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द परपेंडिकुलर वन, नॉट परपेंडिकुलर, द यू नो द रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है वो इन दोनों का जो टेल है वहां पे रहेगा. एंड दिस, and you just draw the parallel lines and just join that one to get the head of this resultant vector. ठीक है. So पहले हम लोग don't no, I'm gonna skip this one. Here we go. Here we come. This one is very मुझे बहुत अच्छा लगा कि you guys are asking this type of question. I'm very happy. Right. Ask this type of question. The particle is thrown at the initial speed of view at an angle of theta with the horizon. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं. By the time after which the velocity of the projectile becomes perpendicular to the initial velocity. ठीक है. Right. So they're having this is your theta and your speed is u like this. अच्छा. So just draw it. By the time after which the velocity of the particle becomes perpendicular to the initial velocity. ठीक है. So u is like this. If you just draw like this. This is a coordinate axis. इनिशियली ये कैसा था, ऐसा था. इंग्लिश थीटा. फाइनली बोला कि ये आपका 90 हो जाएगा. राइट. 90 टुवर्ड्स व्हाट, अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी को ट्रैक करोगे देन यू कैन फाइंड. पहले ऐसे था, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे. राइट. तो अगर 90 डिग्री होना है तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा आपका, यू ऐसा आ जाएगा. लेट दिस बी यू विद इनिशियल वेलोसिटी, लेट दिस बी वी. ठीक है. एंड दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 होना चाहिए. एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ व्हाट, मतलब अपने को टाइम निकालना. राइट. मतलब आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स इट गोना मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टुवर्ड्स इनिशियल वेलोसिटी. राइट. तो यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन, यू कैन सी. तो इनिशियली अगर आप दोनों देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को डील करने का ना बहुत अच्छा तरीका ये है, जस्ट स्प्लिट द 2D कंपोनेंट टू 1D एंड 1D. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, 2D में है. राइट ना. इसको क्या कर लो ना, 1D में तोड़ दो. राइट. So if you just see the first one, the first thing in vertical line, the particle is having a vertical velocity in y direction that is equal to u into sin theta. Right. At this point, this will happen what, v into sin 90 minus theta, v cos theta. ठीक है. So what is your u initial in y direction? In y direction equal to u into sin theta. What is your u final? Equal to v into cos theta. Getting this one? Okay, very good. अच्छा, you're supposed to find. So what is your g? G is acceleration here. Let's just हम इसे this will be positive, this will be negative. Downward is negative. This is minus c. Acceleration is not minus c.
Now you can use V equal to E plus AT. So V final equal to V initial plus A into T. फाइनल कितना है आपके पास V into cos theta equal to V initial कितना U into sin theta plus minus T into T. अच्छा यहाँ पर you know the G, you know U, you know theta, बट यहाँ पे आपको V पता नहीं है, ठीक है, तो V के लिए हम क्या करेंगे, V हम के लिए हम लगाएंगे रिलेशनशिप, you know रिलेशनशिप यार बताओ, देखो as you can see in the y direction only the velocity gonna change, in the y in the x direction velocity change ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, ठीक है, हमने क्या किया, we just split it out, no हमने x पे x डायरेक्शन को अलग से डील कर रहे हैं and we are dealing with the y direction in another term, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, जो u का जो cos थीटा होगा, this u cos theta x, I'm talking about x component, that must be equal to v cos 90 minus theta means v sin theta. This implies what, v will be equal to u sin theta by, sorry, u cos theta na, will be equal to v, this v will be equal to u cos theta upon sin theta. So this will be equal to, you know, u cos theta. Okay, so this v, we'll just put it out here, this v will be equal to u cos square theta by sin theta. v की जगह मैंने u cos theta by sin theta रखा, equal to u sin theta minus dt. This implies what, t will be equal to, you know, u cos just u sin theta minus u cos square theta by sin theta is equal to u sin square theta minus cos square theta divided by sin theta, ठीक है, देन यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos square theta को आप cos square theta minus cos square, आई गेस, नहीं नहीं cos square theta, हाँ cos square theta होता है, देन यू कैन राइट इट डाउन, बहुत सिंपल, ठीक है, ये दिस विल बी आंसर, मतलब ऐसे ही डील करना है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में, तो जस्ट split the 2D particle into two 1D and 1D. Okay, this is the second question we are having. A bullet of mass 100 gram is fired at the velocity of 800 meter per second. After passing through a ball, this must be wall, yeah, a wall of 1 meter thick, velocity decreases to 100 meter per second. Find the average distance. बहुत simple है, average distance पूछा है, means you are supposed to find, you know, you are supposed to find the acceleration. मतलब अगर मैं इसको, मतलब this wall, right, आपका बुलेट है ऐसे, और हुआ कि यहाँ पे आपका कितना था 800 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितना है आपका 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यू नो द मास कितना 100 ग्राम है, ठीक है, ओके, सो आप ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम दैट आई हैव डिस्कस्ड, व्हाट, W डेल्टा KE will be equal to वर्क डन, ठीक है, W के कितना था हाफ इंटू M इंटू वही फाइनल, चलो 800 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन कितना है, फोर्स इंटू force given by the wall into distance कितना है आपको 1 मीटर, so the force given by the wall, the force offered or the resistance offered by the wall, average resistance will be equal to this, you know, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको निकालना, आई लव राइटिंग एस दिस एज डेल्टा की अपॉन इनटू 1 मीटर, तो दिस इज द आंसर, बहुत सिंपल है, वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर आप यू नो यूज करना सीख गए ना, तो दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है, ओके, सो मूविंग नेक्स्ट ना, हाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक whoever asked this question, you are great, you are going right, अब अच्छे जा रहे हो, right, you have asked what कि एक्शन रिएक्शंस आर ऑलवेज इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि सही बात है क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है ऐसे, then how we stand up, because according to the equal third law it will be equal direction for your action and the force should be net force should be zero, बहुत सिंपल सी बात है, राइट,
यू नो जब यहाँ पे जो बंदा कोई बड़ा आंसर क्वेश्चन उन्होंने सही सोचा है, पर आप ना लाइक आपको फिजिक्स लिखने का ना तरीका आना चाहिए. यस, यू डोंट नो बेसिकली हाउ टू राइट फिजिक्स. So to write physics, first thing that I need to specify is two things. First thing, what is your frame of reference and what is your system? फिजिक्स को टच करने से पहले आपको ये दोनों चीजें आपको फिक्स करना होगा कि आपका सिस्टम क्या है, कि मतलब आप किसके ऊपर डील करना चाहते हो, मतलब किसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हो. दैट इज दैट इज कॉल्ड सिस्टम. एंड टू चूज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली योर कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. सो मान लो कि अगर आप यहाँ पे हो रहे हैं स्टैंडिंग ओवर हियर. अगर आप यहाँ पे स्टैंड अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो एंड यू जस्ट स्टूड अप, राइट. इफ यू स्टूड अप ऑन हैड व्हाट विल हैपन, आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया, किसी ग्राउंड को अप्लाई किया. उतना फोर्स किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, राइट. तो यहाँ पे जब हम एमबीडी ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे, तो हम इंडिविजुअल या तो हम किसकी बात करेंगे, या तो हम इंसान की जो बंदा है उसी का ड्रॉ करेंगे, या फिर हम क्या करें, अर्थ की करेंगे. अगर हम अर्थ की करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका एफ फोर्स ऐसे आया. पर अगर हम दिस पर्सन का अगर हम एफबी ड्रॉ करेंगे, then we can just write it out the force external, the reaction force that is coming from the ground is equal to this one. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया जो कि ग्राउंड से आ रहा है. ठीक है, तो इसके लिए आप ऊपर जा रहे हो. ठीक ठीक है ना. अगर आपको कोई पूछे कि सर हम ग्राउंड और अर्थ को हम अगर हम दोनों को सिस्टम सिस्टम मान ले तो क्या होगा, बट ठीक है ले लो. देन क्या होगा ना, अगर ये इंसान ऊपर जा रहे हैं then अर्थ भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा, so that के the center of mass of both the particles of the both the systems will be at the zero. क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का इंटरनल फोर्स है. ठीक है, और इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास की कोई सा भी चेंज नहीं होता है, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होता. ठीक है. moving next, what is the linear momentum of a lighter body when the mass is constant? I mean to view बेटा बहुत सिंपल बात है. नॉट एन डिस्कस दिस वन. इधर मैं बेंडिंग को साइक्लिस्ट बेटा मैंने बताया था आपको कि फॉर एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर आप सर्कुलर मोशन में जाना चाहते हैं फिर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, राइट. तो जब वो साइक्लिस्ट स्ट्रेट होता है तो कोई फोर्स नहीं जाता है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स से जाता है, राइट. बट अगर वो साइक्लिस्ट थोड़ा बेंड हो जाता है लाइक दिस, तो रिएक्शन फोर्स थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा थीटा, और इस रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट इसमें आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड आर cos थीटा. और ये आर cos थीटा क्या होगा ना, हेल्प करेगा. दिस आर cos थीटा विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जितना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उतना ही आपका टॉप आएगा. साइक्लिस्ट को क्या चाहिए, शार्प टर्न चाहिए ना, तो राइट. दे नीड शार्प टर्न, ऐसे कैसे ऐसे ऐसे. So for sharp turns, they're supposed to increase their centripetal acceleration. That's why only they just bend towards the curve. Ready this one? Okay. Moving next now. Study improve laws of conservation momentum law. Yeah, state and prove laws of conservation momentum. 9th class में देख लो तो. You can just see now. This is very simple. How to convert kilometer per मुझे इतना पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड होता है. तो कितना होगा ये, 18 into 5 by 18. Yeah. Just multiply with 5 by 18. You're gonna find it out. ठीक है. मैंने बस इतना याद रखा कि 80 किलोमीटर पर आवर इक्वल 5 मीटर पर सेकंड. ये आप जब बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करते हैं आपका हैबिट शिफ्ट में आ जाता है. व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट. ठीक है. हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस इज द यूनिट? नो, पावर इज व्हाट. दिस इज वर्क डन पर सेकंड. नो, दिस इज जूल पर सेकंड. और जूल पर सेकंड को किसी ने बोल दिया व्हाट. ठीक है. दिस इज एक्सप्लेन वेक्टर एंड वेक्टर. वेक्टर एंड वेक्टर बेटा मैं अभी दिस इज द फोर्थ सेशन आई एम टेकिंग, और पूरे 1 2 3 मैंने तीनों सेशन में वेक्टर के बारे में बताया है. जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दैम. ओके. एंड yeah, the question that we have asked in this session is quite interesting, and बहुत अच्छा लगा, स्पेशली दैट सोचने वाला कि हम जब वैसे ऊपर whenever we push upward how we can do, हम ऊपर कैसे जाते जबकि हमारा नेट फोर्स 0 होना चाहिए. आई होप कि I have answered the question कि whenever you apply a force
So whenever you write in physics, you are supposed to specify two things. The first thing is your system on which you can apply the physics. इसके ऊपर आप लिखना चाहते हो फिजिक्स, फिजिक्स के लॉ आप किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, बहुत स्पेसिफाई करो आप, right? That is the first thing. And second thing that you need to specify is your frame of reference, or indirectly your bounded access system. These are the two things you are supposed to uh, you know specify in order to write the physics. ठीक है? So I hope I answered all questions. Yeah, just check any question I missed. Oh, one thing I didn't complete. There is one question that I'm seeing right now. Okay, what is the right overview of the chapter dimensional analysis? Dimensional analysis. Dimensional analysis is a very interesting चैप्टर, क्योंकि देखो ऐसा लगता है टिपिकल 11th 12th के बच्चा क्या करता है, डायमेंशन को छोड़ देता है कि क्या है, छोटे से चैप्टर है, कुछ नहीं होगा इससे। बट जे एडवांस को बहुत पसंद है डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, जब आप कभी फंस जाओगे क्वेश्चन में, then बस उसके यूनिट देख के यू कैन गेस द आंसर, बस by seeing the units, right? So this much is powerful, मतलब आपको लगेगा कि वो कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, right? You have to derive all the expression from starting to end, but the question that is in there is just the question of dimension analysis. बहुत सिंपल होता है ये सब, ठीक है? So you just read out there, read मारो और अच्छे से रहो, ठीक है? Yeah, this is last. This is lecture hall by IIT Kanpur. Background you can see this is the B ground. जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं. This, yeah. Thank you. अगर आपको बेस कुछ भी डाउट हो, then you can write it in our chat box और YouTube की comment box में लिख सकते हो, ठीक है? With this, thank you, चलो.